Om Namah Shivaya. Hello my beautiful soul. Hello my dear ones. This is Archana. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारा इकोनॉमिक्स का हैंड रिटन नोट्स का सीरीज चल रहा है। एक वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं, दूसरा वीडियो मैं आपके सामने इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पेज पे हम थे, वहीं से रीस्टार्ट करेंगे। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो विद ऑल फ्रेंड्स। एंड अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके डियर ऑल, एंड सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। एंड एक इन्फॉर्मेशन है डियर कि हमारी पेड बैच इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी पीजीटी होम साइंस एंड सीटेट के पेड बैच स्टार्ट हो चुके हैं, चल रहे हैं ऑलरेडी। एंड 11th and 12th economics and 10th and 12th home science के सीरीज़ भी चल रहे हैं। If you are interested to join the class, kindly let me know and kindly comment in comment box. I'll add you in my paid batch as soon as possible. And that's it. It was all about information, and so without wasting our time, let's start. ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव के आशीर्वाद के साथ हम अपना सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th क्लास इकोनॉमिक्स, राइट, हैंड रिटन नोट्स एंड ईयर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पेज पे थे, वहीं से हम रीस्टार्ट करेंगे। राइट, देखते जाओ कहाँ है, वहीं तुरंत मुझे बोल देना। जस्ट वेट। Importance of economics. क्वेश्चन आंसर की सीरीज, डेटा कलेक्शन, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डियर वंस, हम इसी पेज पे थे, यहीं से रीस्टार्ट करते हैं। राइट, ताकि आपको मतलब कोई कन्फ्यूज़न ना हो और स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं। तो अगर कोई इशू आता है, वैसे आवाज़ वगैरह का आई एम ट्राइंग कि मैं मतलब तेज़ से बोलूँ, फिर भी मतलब अगर कोई इशू आता है तो आप प्लीज़ बताइएगा। एंड जो भी मतलब आपका इश्यूज़ हैं, किसी भी तरह का सजेशन, सलाह, मशवरा, कुछ भी आप बताइएगा ज़रूर। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फॉलोइंग पॉइंट क्लासीफाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। राइट, इट सिंप्लीफाइज मास ऑफ डेटा, ठीक है ना। इट हेल्प्स टू गेट concrete the information about any problem. It helps for reliable and objective decision making. It facilitates comparison. It facilitates prediction. It helps in formulating suitable policies. Correct. Importance of statistics for इकोनॉमिक्स, राइट। गवर्नमेंट के लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स का? तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर गवर्नमेंट। स्टैटिस्टिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट फॉर फॉलोइंग सेंस, ठीक है ना। फॉलोइंग रीज़न से है फॉर पॉलिसी मेकिंग। जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो हमें स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होनी ज़रूरी है। राइट, फॉर एफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन
मेकिंग फॉर effective politics for welfare of the people. Correct? अच्छा, ओह आगे चल रही है, हाँ सही है, राइट। फिर आपका क्या आता है द क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चंस के आपके क्वालिटीज़ देख लो क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन कैसे होना चाहिए? क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगियस, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन शुड नॉट बी डबल नेगेटिव, राइट। क्वेश्चन शुड नॉट बी लीडिंग अनदर queries. Question should not indicate alternative to all answers. ठीक है ना? There are two types of questions. कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं? ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन allows individuals answers but they are difficult to interrupt and hard to score because this is a lot of variation in answers. ठीक है ना? और आपके एक होते क्लोज एंडेड and structured questions can be answered in two ways. First two ways, they may be answered in yes or no. The answer may one of the given alternative और MCQ. ठीक है ना? उसके बाद आपके आते हैं एडवांटेज। इसके क्या हैं? These questions are easy to use, codify for the analysis because all response choose from the given options. ठीक है ना? सारे जो रिस्पॉन्स होते हैं वो ऑप्शंस में ही चूज़ करने होते हैं। करेक्ट? कलेक्शन ऑफ डेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। डेटा कलेक्शन इज़ the process of gathering and meaning information on for targeted, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। targeted data tool with help in reaching a sound conclusion by the providing information. Correct? The purpose of data collection is to understand, explain and analyze a problem and cause behind it. Statistical data can be obtained from two sources, primary and secondary. Primary data, when a resources collects the data by conducting enquiries, such data is called primary data. Primary data is based on first hand information. It is obtained by conducting a survey. चलिए, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कौन कौन से होते हैं मेथड? प्राइमरी डेटा, ठीक है ना? प्राइमरी डेटा का देखो, इन्वेस्टिगेटर इज़ अ पर्सन हु कलेक्ट डेटा फॉर सम डेफिनेट पर्पस. Enumerator is a person who help him in collecting data. Correct? पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना? दिस मैथड इज़ व्हेन इन्वेस्टिगेटर हैज़ एक्सेस टू ऑल members. He can conduct
face to face interview with the respondent. Advantages क्या हैं? The investigator has opportunity to explain the questions and also the answer. Misunderstanding can be avoided. Reaction of respondent provide supplementary information. डिसएडवांटेजेस के क्या है बेटा? जस्ट वेट, हाँ एक मिनट, हाँ नाउ दिस इज ओके. डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड यूज एज मेनी पीपल मे नॉट हैव टेलीफोन. करेक्ट. रिएक्शन कैन नॉट बी वॉच्ड. Some sets is involved and little time is involved. पायलट सर्वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, इसको याद कर लो, अपनी बुक से भी देख लेना. और मैं बुक के थ्रू तो मैं चैप्टर वाइज लेके आऊँगी 100%. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ़ यू. ठीक है. कंप्लीट इकोनॉमिक्स मैं आपको आगे चल के दे रही हूँ. ठीक है ना. और इट विल हेल्प यू. बट ये आप देख लो. पायलट सर्वे क्या होता है? व्हेन क्वेश्चनेयर इट इज़ टू बी ट्राइड आउट और टेस्टेड विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट. समझ में आया? दिस इज नोन एज पायलट सर्वे. करेक्ट. एडवांटेज क्या होता है? इट प्रोवाइड प्रिलिमिनरी डेटा अबाउट द सर्वे. It helps in remaining the short comings of questionnaires. It helps in accessing the suitability of questions, clarify the instructions, etc. Limitation of sampling method, lack of accuracy, wrong collection, selection of थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ना, selection of improper sample, not appropriate where survey is required, small size of universe size items. Which method is better, sense method or sampling method? Sampling method is generally regarded better and more appropriate in components to access method because following reason. It server time, money. It serves time, money and datas. This method is more appropriate where data with regular information is required. Correct? Collective primary data and secondary data. Collective primary data is required expressive both terms of time and money.
Secondary data requires less time and money, hence it is congruential. Method of collection data. Survey is method of gathering information for collection data. The most common type of requirements used for survey are following. Questionnaire. Following points should be kept in the mind while preparing questionnaire. Questionnaire should not be too long. Questions should be easy to understand. The question should be arranged in logical orders. The series of questions should be more from general to specific. Questions should be precise and clear. डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? इट एक्सप्रेसिव एज इट नीड्स रिक्वायर्ड ट्रेंड इंटरव्यूज. It time consuming, right? The respondent make inhabit form saying answers sitting face to face. Mailing questions, questionnaire. एक मिनट रुक जाओ. हाँ. When data in a survey collected by mail, questionnaire is sent to each individual by mail with a request to complete and request it within a given time period. Advantage क्या है? It less expensive. People in remote areas can be contacted through internet. It doesn't allow influencing the respondent. It permits respondent to have sufficient time to answer the queries, unlike personal and telephonic interviews. ठीक है ना? ये जो है क्या करता है? सफिशिएंट टाइम देता है. क्लियर? आगे चलो. डिसएडवांटेज क्या है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी in misunderstanding in questions. There is low response rate. People living in poor internet, correct, activities cannot be accessed. Telephonic interview. In telephonic interview, the interviewer asks queries other then telephone to respondent. Advantage क्या है इसके? It is cheaper method. It is time saving. The respondent can be helped by the researchers by clarifying the question. It is better in case of those respondents who are reluctant to answer question in personal interview. Question answers. ठीक है ना? Make a list of activities that constitute
ordinary business of life are those economic activities. The following are activities that constitute the ordinary business of life: buying of goods and services, rendering services to be a company employees and workers, selling of goods and services, production process carried out by firm. These activities are undertaken for monetary gain and are thus economic activities. The government and policy makers use statistical data to formulate suitable policies of economic development. Illustrate with two examples. The statistical data provide the base for government and policy makers to formulate policies. The statistical data not only help them to analyze, evaluate those outcomes of past policies, but also request them to take corrective measures and to formulate policies. Statistical data also help the requirement to questionnaire the relation of economic variables and form policies accordingly. नेक्स्ट आइए, दिस इज ब्लर काफ़ी दिख रहा है बच्चा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ रीड करने की. दिस सर्वे included many steps need to plan carefully. Survey can be done by personal interview, mailing, questionnaire and telephonic interview. For if want to know about the popularity of a candidate standing for hot voice post, we can use any of above method. Secondary data. Secondary data क्या होता है? If the data being collected and formed by the some other agency are called secondary data. मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रही थी. सेकेंडरी डेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, राइट. डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, करेक्ट. प्राइमरी डेटा आर दोज दैट आर कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार जब कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना. सेकेंडरी डेटा रेफर्स टू दोज डेटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, किसी और ने कलेक्ट किया, हम प्रेजेंट कर रहे हैं,
हमने किसी और से लिया, फर्स्ट कलेक्शन से हमने लिया, हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। दे आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर फर्स्ट टाइम, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर पहली बार उसको कलेक्ट करता है, ठीक, ये ओरिजिनल होते हैं। दीज आर नॉट ओरिजिनल बिकॉज someone else has collected these for some purpose, ठीक है ना, his own purpose. There are in form of raw material, ठीक, raw material होते हैं। These are in finished form, correct। चलो फिर हमारा आ गया पॉपुलेशन इनवर्स। मैं थोड़ा स्टॉप करूं क्या? आई थिंक आई शुड स्टॉप इट ना। अभी थोड़ा सा मैं स्टॉप करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं लेके आती हूँ ताकि सक्सेसफुली मतलब डिलीवर हो जाए, राइट। ओके डियर ऑल, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। लव यू ऑल गाइज।